इंटीग्रेशन में लेट्स गो थ्रू सम वेरी बेसिक थिंग्स. सबसे पहले तो if we differentiate y we get dy by dx. So what am I writing? If I will get my y, if I integrate the derivative which is dy by dx with respect to dx, is that right? दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ, if y is an integral of ax to the power n dx, so how do we integrate? Power increases by 1 and we divide by the increased power plus c. Never forget that. Is this clear? उसके बाद if we have any particular basic algebraic functions, very basic algebraic functions, and if you have to integrate it, कोई भी function है algebraic with a power n, and if I have to integrate it, जी तो सर आप बात कर लेना, बात कर लेना. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास हाउ डू वी इंटीग्रेट इट. पावर में फर्स्ट we increase a power, divide by the increased power, and what else do we do? Divide by the derivative of the function as well plus c. Is that right? Derivative एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं, अभी 3 दफा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल y, तो मैं ऐसी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बट हर दफा इंटीग्रेट करके y नहीं आता. इट डिपेंड्स व्हाट यू आर इंटीग्रेटिंग. So for example, you had 2x plus 3 square dx. How do you integrate it? जरा बताओ मुझे. क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर अंदर का डेरिवेटिव 2 एंड देन प्लस c. सही है. सो व्हाट अभी तो बात कर रहा हूँ मैं, एक सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, सो अंदर का डेरिवेटिव भी एंड डिवाइड बाय 2. इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, वी इंटीग्रेट dy बाय dx आता है. इफ वी इंटीग्रेट d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर विद dx. dx क्या बता रहा है? विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमें क्या मिलता है? dy बाय dx. इंटीग्रेशन इज अ, और एरिया हमें मिल जाता है if we integrate and put limits b a y and dx. इससे हमें मिलता है एरिया बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस. इसकी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ. For example, if I have this particular curve and if I'm integrating y means the original function with respect to x, with b being my upper limit and a being my lower limit, I will get this particular area between the curve and the x-axis. Is this clear? Area between the curve and the x-axis. ये कब आएगा मेरे पास? When I am integrating y with respect to x. Limits भी x की होंगी. Y will also be substituted in terms of x. It will then be integrated and then the limits applied. Limits applied को जरा मैं दोबारा बता देता हूँ. For example, if I am integrating, try to understand all these general terms. They will help you in the long run. For example, if I say that the upper limit is b, lower limit is a, the function that I am integrating, I am calling it fx. सही है ना? तो what do I get? First तो मैं कहता हूँ जो इंटीग्रेट होकर फंक्शन है, let me call that fx. एक अलग नाम से मैंने उसे बुला दिया.
कैपिटल एफ इज द इंटीग्रेटेड फंक्शन. देन व्हाट डू वी डू? एफ के अंदर बी डालते हैं अपर लिमिट, माइनस एफ के अंदर ए डाल देते हैं, प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब्ट्रैक्ट होता ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है. दैट इज हाउ वी गेट एरिया. सिमिलरली इफ आई वर टू फाइंड एरिया बिटवीन the curve and the y-axis. If I were to find, बिल्कुल बिल्कुल वो यही तो करते हैं ना, हम दोनों कर्व्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. So if I were to find area between the curve and the y-axis, upper limit यहाँ पे being b, lower limit being 8, this is the area between the curve and the y-axis. Yeah, how do we get this area between the curve and the y-axis? So this area is found by integrating x with respect to y. Now be careful that the limits will also be put for y. वैल्यूज भी y के होंगे, आपको x पहले y की टर्म्स में ले जाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव की बात हो रही है. What if I have area below the x-axis? The area comes as negative. तो उसको नेगेटिव करने को पॉजिटिव करने के लिए we either take modulus या we multiplied by a negative value पहले ही. इस तरह का लेफ्ट साइड का एरिया ऑन द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस एंड यू आर फाइंडिंग एरिया बिटवीन द कर्व एंड द वाई एक्सिस, तो उसमें भी आप ये वाला काम करेंगे. नेगेटिव एरिया आ रहा है तो फाइनल आप उससे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे. इज दिस क्लियर और नॉट? समझ आ गई बात? कुछ इंटीग्रेशन की चीजें जनरली समझोगे सो मोर हेल्पफुल. इफ आई हैव टू फंक्शंस, सही है, एक फंक्शन है एफ एक्स एंड इट इज सपोज टू बी इंटीग्रेटेड बाय, and another function is gx and that is also be supposed to integrated by. So I can simply first subtract the functions and then integrate it. This is all we do when we are finding area between two curves या एक curve and a line. हम पता था first we'll integrate the curve, उससे curve और x axis का पूरा आ जाएगा, and then line और x axis का पूरा आ जाएगा. So what we can do is we can subtract them first and then integrate and put the values, सिर्फ same area आता है. This is used when we are finding area enclosed between two different equations. यहाँ तक बात clear है नहीं? समझ आ गई बात? Anything that is not clear? Clear है? Okay, now volume of rotation भी area से आता है. नहीं, depends on the question. Volume of rotation will be found y square dx. सही है. इसी तरीके से if we were to find when it is rotated 360 degree about y axis, तो हम करते हैं x square dy. Yes, whatever for y का function है, where first what is the difference? Area करते हुए हम क्या करते हैं? We put in the entire function. For example, if you want to find area, what will you do? You will plug in the function of y in terms of x. You will integrate it. You will put in the limits. You'll get your values. यहाँ पे एक चीज extra होगी. First, you will put in the function of y. Then you will square it. या आपको direct y square पता है तो that is what you will plug in. Y पता है तो you plug in y. First, you square it. Then you integrate it. Then you put in the limits, and then you multiply the final value by pi as well. Is this clear or not? इसमें वही होता है कि if a curve is rotated, तो curve और x axis के बीच का जो पूरा एरिया है वो उसकी वॉल्यूम आपको देगा. And if a line is rotated, तो line और x axis के बीच का जो पूरा एरिया है, that area rotates and gives you the volume. So if you were to find the volume of any of a region between two things, तो आप इस तरीके से करते हैं वॉल्यूम व्हेन कर्व इज रोटेटेड माइनस वॉल्यूम व्हेन लाइन इज रोटेटेड और वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. एंड सिमिलरली यू कैन सब्ट्रैक्ट देम फर्स्ट. स्क्वायरिंग तो करनी है, स्क्वायरिंग देन सब्ट्रैक्ट देम फर्स्ट
and then you find the integral and then put the limits and then eventually multiply it by pi.